So yes, batteries. न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत आगे निकल गए अपन तो. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू. There are two sources of electrical energy, namely ideal voltage source, ideal voltage source, and दूसरा क्या हो सकता है? Ideal current source. So these are the two main electrical energy sources, or we can say that the electrical energy sources are categorized into these two types. One is the ideal voltage source and another is ideal current source. Now guys, these sources are again subdivided into uh, two main parts: independent and dependent source. Further they can be divided into what we can say independent, independent and dependent sources. Dependent sources. Can you just tell me what is mean by independent and dependent sources? With the name, can we guess what kind of sources are these? Audible, guys? Audible? Yes, sir. Can you just tell me that independent and dependent sources means what? To whom we can call it independent or dependent sources? The sources that are depend on something in the circuit, they are the dependent sources. And if the sources are not depend on any kind of element in the circuit, then they are the independent sources. इतना simple आंसर हम उसका दे सकते हैं. इतना कुछ पता नहीं. उदाहरण, so listen, मैंने पहले ही बताया था कि this is not an motorcycle communication. So it's an interactive session for all of us. तो यहाँ पे हमको दोनों बोलना है, हम भी बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ बात कर रहा हूँ, तो आपको बोलना है. The question will be discussed or difficult, but you have to speak, you have to respond, ताकि मुझे समझ सके कि you are getting it or not. Okay. Anyway, so what we say an ideal voltage source. अगर इसके बारे में बात करते हैं पहला पहला वाला, an ideal voltage source. So what we can say an ideal voltage source is a two terminal element. Two terminal element कैसे? इनको यहाँ पे एक ideal voltage source suppose two terminal voltage sources, ये दो terminals, इसके ये first ये second, right? So plus minus Vs, Vs is the source voltage, and current flowing through this is suppose Is. Current flowing through this is suppose Is. So what we can say, an ideal voltage source is a two-terminal element. It's a two-terminal element in which the voltage Vs, this is the voltage Vs. Voltage Vs is completely independent of the current Is. Voltage Vs is completely independent of the current Is. टर्मिनल ने वोल्टेज सोर्स करंट पे डिपेंड नहीं है, या जो फ्लो हो रहा है ये इस वोल्टेज डिपेंड नहीं है. वी कैन कॉल इट्स आइडियल वोल्टेज सोर्स. दिस इज कॉल्ड एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट? And as far as the characteristics of this ideal voltage source is concerned, so what we can draw, यहाँ पे देखिए, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करने चाहिए, Vs वर्सेस Is. सो व्हाट वी कैन से, अगर हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है एट एनी वैल्यू, राइट, देन इट इज नथिंग बट द आइडियल VI characteristics of ideal voltage source. So this figure is the VI characteristics of ideal voltage source. Ideal voltage source, right? Okay, so what we can say, an ideal voltage source, an ideal voltage source is a two-terminal element in which the voltage Vs is completely independent of the current Is through its terminal, right? Now voltage source, what we can say, voltage source need not have any constant magnitude. जरूरी है कि हर वक्त ये जो voltage source है इसकी magnitude constant ही रहे, fix ही रहे.
This battery shows that the magnitude of this voltage source is fixed. Suppose ये प्लस माइनस 10 वोल्ट होगा, तो ये फिक्स हो गया ना कि ये 10 वोल्ट ही है, ये 10 से कम भी नहीं है या 10 से ज्यादा भी नहीं है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? आर यू गेटिंग? Yes, sir. Okay. So it is not necessary that every time the voltage source have constant magnitude. जरूरी नहीं कि हर वक्त ये magnitude constant रहे. Sometimes they can be variable also. So in many cases the specified voltage may be time dependent. Variable का मतलब क्या होता है? Time dependent. तो बहुत सारे cases में ऐसे भी हो सकता है कि ये time dependent है. तो इसको कैसे represent करेंगे हम time dependent को? यहाँ पे draw करता हूँ मैं time dependent को show करने के लिए, right? So maybe they are like this, and they can be represented with this variation or this symbolical representation. अब जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था तो सिर्फ वीएस लिखा था, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट है तो मैंने यहाँ पे वीएस ऑफ टी लिखा, क्योंकि ये वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर वीएस ऑफ टी. एंड अगेन करंट फ्लोइंग with these terminals is also time dependent. So how we can represent is of t? जैसे यहाँ पे फिक्स था is, तो यहाँ पे क्या होगा? is of t. So what we can say, in voltage source or the voltage sources need not have a constant magnitude at all. जरूरी नहीं कि हर वक्त ये constant ही रहे. In many cases the specified voltage may be time dependent. बहुत सारे cases में ये time dependent होता है कि time के साथ ये vary हो सकता है, right? लाइक अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म. ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है. देखिए, अगर मैं साइन वेव ड्रॉ करता हूँ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मैग्नीट्यूड इज गोइंग ऑन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये टाइम है हमारा, ये सपोज वीएस है, तो ये चेंज हो रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज गोइंग टू बी चेंज, राइट? सो साइनोसाइडल वेवफॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. इज इट क्लियर टू यू गाइज? इज इट क्लियर टू यू? Yes or no? Yes, sir. So this is about the ideal voltage source. We are talked about the ideal voltage source. Now, as far as the practical voltage source is concerned, what we can say? अगर प्रैक्टिक, ये तो हो गया आइडियल के. ऐसे आइडियल होता है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है और ये जो मैग्नीट्यूड है इसका ये कांस्टेंट है फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स. लेकिन अगर जरूरी नहीं कि हर वक्त वो कांस्टेंट ही रहे मैग्नीट्यूड. अगर वेरिएबल है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है. वेरिएबल अगर है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है करंट भी और वोल्टेज भी. और sinusoidal is the example for that variable voltage source, right? Now this is about the ideal voltage source. What about the practical voltage source? So in practical voltage source, what we can say, the internal resistance, जो internal resistance होता है guys, is represented in series with source. जो भी internal resistance है ना, यहाँ पे मैं draw करता हूँ practical, yes, practical voltage source. जो practical voltage source जो है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में इसके शो किया जाता है, सीरीज विद द सोर्स, राइट? इन सीरीज विद द सोर्स. सो द इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन सीरीज विद द सोर्स. सो ये हो गया हमारा आर, दिस इज वीएस एंड करंट फ्लोइंग इज आईएस, राइट? सो इन दिस वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स फॉल्स. यहाँ पे देखिए, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है वो भी हम देखेंगे. ए बी सी डी, सॉरी, ए बी सी इज हियर, दिस इज डी, एंड आई एम ड्रॉइंग वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ये जो ड्रॉ किया था हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए था, एंड नाउ वी आर ड्रॉइंग इट फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है वो भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज V of t. Then the voltage that we are getting over here is V of t, that we have to show here. Then this is is and this is Vs. Okay, so what here is the voltage across the terminals. यहाँ पे जो भी voltage है, voltage across the terminal falls as the current through it increases. अगर इसमें से current increase हो रहा है तो voltage at this terminal क्या होता है? कम होते जाएगा, ऐसे कम होते जाएगा, राइट? व्हाई? बिकॉज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. अगर यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट. तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस सीरीज में आता है इसके, देन व्हाट वी कैन से, द टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूसेस as the
voltage across the terminal falls, yes, voltage across the terminal falls as the current through it increases. जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसके टर्मिनल्स के वोल्टेज कम होते जाएगा, राइट? सो दिस इज देन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। लेकिन आइडियल में क्या बोलते हैं हम कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज बिकम्स कांस्टेंट, है ना? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, करंट ही बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बिकॉज 10 वोल्ट इज अ फिक्स वैल्यू, है ना? लेकिन करंट वैरी हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, बट मैग्नीट्यूड इज फिक्स। एज फार एज द वोल्टेज सोर्सेज जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब वैरी हो रहा है तो करंट भी वैरी होगा, एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। क्लियर? And as far as practical voltage source is concerned, the resistance is in series with the source and the terminal voltage reduces as the current increases, right? And it is being given by Vt is the terminal voltage. This voltage is nothing but the source voltage minus drop across this resistance, which is nothing but Is into R. Is इंटू आर, इसका अक्रॉस का ड्रॉप, यानी जो भी रहेगा वो अगर मैं सोर्स से माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? Vt. सो दिस Vt इज दिस वन, दिस Vt इज दिस वन. इज इट ओके गाइज? इज इट ओके? यस और नो? यस और नो गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is all about the ideal voltage source, right? This is all about the ideal voltage source. Now we have to go with the ideal current. So अब ideal voltage source के बारे में तो देख लिया, अब हम देखेंगे ideal current source कैसे होता है, ठीक है? तो पहले इसको थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ. Now we are going for the ideal current source. Now, as far as an ideal current, constant current source is concerned, is a two terminal element in which the current Is is completely, जैसे आपने voltage के बारे में बोला था कि voltage Vs is completely independent of the current Is across its terminal. तो यहाँ पे vice versa होगा. Ideal current source में क्या हम बोल सकते हैं कि it's a two terminal element in which the current Is is completely independent of the voltage Vs across its terminal. अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? आइडियल करंट सोर्स के लिए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर करंट सोर्स. ये सिंबल है उसका, एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज Vs ओवर हियर, ठीक है? और ये है हमारा Is ऑफ t, ये Is ऑफ t. फाइन. सो दिस इज प्लस माइनस Vs. नाउ इट्स characteristics, ideal characteristics same as that of the ideal voltage source, लेकिन सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे क्या था? ये Vt था, सॉरी ये Vt था. यहाँ पे आएगा हमारा Is, है ना? और ये जो करंट है हम इसको सपोज I1 बोलते हैं. ये Vs हो गया, ये Is है तो ये I1, ठीक है ना? सो दिस इज एन Vi characteristics फॉर आइडियल करंट सोर्स. Ideal current source. So what we can say, an ideal constant current source is a two terminal element, in which the current Is, this current Is is completely independent of the voltage Vs, across its terminals. यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. That's why it is called as ideal current source. It's called as ideal current source. देखिए यहाँ पे भी जो देखे हमने वो डिपेंड वाले नहीं है, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम वो डिपेंड वाले नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि दे आर दी इंडिपेंडेंट current and voltage sources. Are you getting what I am saying? They are the independent current and voltage sources. Yes or no? Yes or no, guys? Yes, sir. Yes, sir. So these are the independent voltage and current sources. जैसे देखो हमने पहले sources of electrical energy को define किया कि they have been categorized into two types, ideal voltage source and ideal current source. Again, they have been subdivided into independent and dependent sources. Means ideal voltage source and ideal current sources are independent also, and ideal voltage source and current sources are dependent also. तो यहाँ पे अब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, they are independents. तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट के बारे में, राइट? सो कहाँ पे थे हम?
with the VI characteristics of ideal current source. So like voltage source we can have current sources of constant magnitude. जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि constant magnitude का voltage source होता है, वैसे ही constant magnitude का current source भी हम देख सकते हैं. So like voltage sources we can have current sources of constant magnitude IS, or we can say sources whose current varies with time. और ऐसे sources की जिसका current vary होता है with respect to time, current vary होता है with respect to time, IS of t, right? तो ये उसका example है. Now यहाँ पे जो show किया है, at any time the value of the current IS is constant. At any time, कोई भी time consider करो, at any time the value of IS is constant. ये change नहीं हो रहा है with respect to voltage across it, लेकिन voltage vary हो रहा है with respect to voltage across it, right? So this is nothing but an ideal constant current source. This is nothing but the ideal constant current source. So this is an ideal constant current source. Is it clear? Now same way, now we have to see, जैसे अपने हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा था, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, राइट? सो इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स द रेजिस्टेंस, जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, सीरीज में था. हमने जो ड्रॉ किया था वोल्टेज सोर्स, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस था. यहाँ पे क्या होगा, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये डिफरेंस हमें ध्यान में रखना है. हियर वी हैव टू अंडरस्टूड दैट चेंज, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होगा, राइट? सो दिस इज अ करंट सोर्स and voltage is Vs in between this. तो सेम वे जैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक सा आइडिया प्रैक्टिकल का, यहाँ पे भी हम, यहाँ पे भी उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ पे भी उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन ये जो है हमारा IT या IS है, एंड हियर इट इज Vs, राइट? सो इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल VI characteristics. तो इसको कैसे डिफाइन किया है? इन प्रैक्टिकल करंट सोर्स द रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विथ सोर्स, द रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विथ सोर्स, राइट? सो इन दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, the magnitude of the current falls as the voltage across its terminal increases. जैसे जैसे टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे करंट की मैग्नीट्यूड कम होते जाएंगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? आर यू गेटिंग? Yes, sir. So this is nothing but the practical current source. ये दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे क्या हो रहा है, magnitude of the current source is constant as far as the voltage across its terminal increases, right? Here the magnitude of the current falls when the voltage across its terminal increases. यहाँ पे increase fall हो रही है जैसे voltage increase होता है, यहाँ पे constant है जैसे भी voltage increase हो रहा है. Why? Because this is an ideal constant current source in which they are independent of each other, and here the resistance is in parallel with the current source, so that this kind of change we can see in a practical current source. So these are the difference between ideal voltage source here and ideal current source over here. यहाँ पे एक वक्त मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है. सो दीज आर नथिंग बट द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स व्हिच इज ऑफ इंडिपेंडेंट टाइप. इज इट ओके गाइस? इज इट ओके? Yes, sir. सो द टर्मिनल करंट इज गिवन बाय, जैसे यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमने ड्रॉ किया था, लिखा था, यहाँ पे टर्मिनल करंट इज गिवन बाय IT is equals to, यहाँ पे टर्मिनल करंट इज गिवन बाय IT is equals to IS, यानी ये वाला कंप्लीट, माइनस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? VS by R, which is nothing but that particular current, VS by R, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? VS. और हमें ओम्स लॉ पता है, R is equals to V by R, V by I है ना, तो I is equals to V by R है ना, I is equals to V by R. ओके, तो इसको लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे? ये V कौन सा है? VS, और ये कौन सा R है? ये रेजिस्टेंस. तो जो करंट मिल रहा है वो क्या है हमारा? पर्टिकुलरली
which current flows through that resistance. Suppose इसको IR बोलते हैं, for example. So what we can say here, IT is equals to IS minus VS by R. So this is a representation for this terminal current, where this R is the internal resistance of the ideal current source. ये R क्या है? ये ideal current source का internal resistance है, right? Now one more thing that we have to focus कि यहाँ पे जो भी हमने discuss किया है, this is all about the ideal voltage source and ideal current source, but they are the independent sources, right? So what we can say that two types of ideal sources that we have discussed are independent sources. दोनों क्या है? Independent sources है. ये ideal है दोनों, लेकिन दोनों independent है, depend नहीं है किस पे. For which voltage and current are independent and are not affected by other parts of the circuit, right? What we can say, for which the voltage and current are independent. दोनों इसमें voltage और current independent है and they are not being affected by other parts of the circuit. सर्किट के किसी अदर पार्ट्स के साथ वो कभी अफेक्ट की वजह से वो अफेक्ट नहीं होते हैं, ताकि वो हम उसको इंडिपेंडेंट बोल सके. इज इट ओके? सो दीज आर द इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, रादर आइडियल वोल्टेज एंड आइडियल करंट सोर्सेस, राइट गाइस? नाउ ये तो हो गया एक इंडिपेंडेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस. विल टॉक अबाउट द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस. तो डिपेंड के लिए, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ. Okay, so now the dependent voltage sources, in case of dependent voltage sources, the source voltage or current is not fixed. इसमें क्या होता है dependent में? source voltage या source current जो है वो fix नहीं होते हैं, but is independent on the voltage or current. लेकिन वो क्या होते हैं? independent of the voltage and current existing at some other location in the circuit. Are you getting what I am saying? In case of dependent sources, the source voltage or current, जो भी source voltage या फिर source current है, is not fixed. They are not being fixed. Fixed नहीं होते, but is dependent on, लेकिन वो depend होते हैं किस पे? But is dependent on the voltage or current existing at some other location in the circuit. Are you getting what I am saying? The meaning of this sentence, guys? I am going to repeat it again. Listen carefully. In case of dependent sources, depends, अगर कोई एक सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, कोई भी होगा. In case of dependent sources, the source voltage, अगर इसमें source voltage या source current है, तो वो फिक्स नहीं है. They are not fixed. वो फिक्स नहीं है, right? But they are dependent on the voltage or current existing at some other location in the circuit. लेकिन अगर सर्किट के किसी और लोकेशन में कोई करंट या वोल्टेज एग्जिस्ट हो रहा है, तो उस पे वो डिपेंड करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नॉट फिक्स्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेस. आर यू गेटिंग नाउ आई एम व्हाट आई एम सेइंग? Guys, we should understood the meaning of this dependent voltage sources and dependent current sources. Again, I am going to repeat once. In case of dependent sources, here listen carefully. Dependent voltage source में या current source में उसकी value जो है source voltage और source current की fix नहीं होती है. They are not getting fixed, but it is dependent on the, लेकिन वो depend होती है किस पे? वोल्टेज और करंट पे. कौन से वोल्टेज और करंट पे? जो एग्जिस्टिंग है एट सम अदर लोकेशन इन द सर्किट. किसी और लोकेशन पे सर्किट में जो भी करंट या वोल्टेज एग्जिस्ट हो रहा है ना, उस पे डिपेंड करता है ये वोल्टेज सोर्स का या करंट सोर्स का वैल्यू. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस. सो अकॉर्डिंगली दिस डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेस आर बीइंग डिवाइडेड. यहाँ पे लिखता हूं डिपेंडेंट और controlled. Why it is called as controlled? Because these voltage sources have been controlled with the existence of voltage and current in other part of the circuit. That's why it is called as controlled sources are. So dependent or controlled sources are, number one, they have been voltage controlled voltage source. Voltage controlled voltage source. In short, we can call it a VCVS, voltage controlled voltage source. यानी ऐसा voltage source जो voltage
से ही कंट्रोल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. Secondly, it is current controlled voltage source. Current controlled voltage source, and in short we can call CCVS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. यानी ऐसा वोल्टेज सोर्स जो करंट के साथ करंट की वजह से कंट्रोल हो रहा है. इज इट ओके गाइस? इज इट ओके? थर्ड वन, voltage controlled current source. Voltage controlled current source, in short we can call VCCS. VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. ऐसा करंट सोर्स जो वोल्टेज की वजह से कंट्रोल हो रहा है, ऐसा करंट सोर्स, राइट. एंड लास्ट वन कौन सा बचता है बताइए? कैन यू प्लीज गेस मी? कैन यू प्लीज टेल मी? लास्ट वन कौन सा बचता है? 4 है, 3 हो गए, लास्ट कौन सा रहेगा? यस प्लीज. लास्ट. current control current source. Yes, very good, very correct. Current control current source. Current control current source, and it is being represented by CCCS, current control current source. So these types of sources mainly occur in the analysis of equivalent circuit of transistors. These kind of type of sources mainly occur in the analysis of equivalent circuits of transistor. ट्रांजिस्टर के जो इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं ना गाइस, जो आपने एडीसी में पढ़े होंगे, सो उसके इक्विवेलेंट सर्किट्स में हम इसको यूज करते हैं. अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो भी मैं आपको शो करता हूँ. एज फार एज द डायग्राम ऑफ इट इज कंसर्न,